Hello students, hope you are doing good. And in my previous video, which is where we are discussing the all full length test series, where we have seen so many questions from all the 10 units of the MPPSC assistant professor, already done with the 50 questions. And in today's video we are going to cover questions 51 to 100. Okay, so this is the part 2, and please watch my part first video so that you have a better idea how we are doing it, and everything that it is really very essential to know is covered in the part 1. Please watch that video, then come to this part 2 video where we are going to cover question from 51 to 100. Okay, so without any wasting our time, let's move to the question number 1. The phrase "the center cannot hold" is from the poem. So the option is T.S. Eliot, Ezra Pound, W.V. Yeats, Wallace Stevens. So Wallace Stevens cannot be there. The center cannot hold is from the W.V. Yeats. The second coming, and when second coming was published, it was published in 1917. Now we have question number 52. That is, which critic is known for the mirror and the lamp? द मिरर एंड द लैम्प के लिए बताइए कौन सा क्रिटिक को जाना जाता है? टेरी एगल्टन, एम एच एब्राहमास, अलोड ब्रूम, नॉर्थरॉप फ्राई. So if you haven't watched my videos on the cultural studies, please watch that videos. वहाँ पे बहुत सारे आपको videos मिल जाएंगे, एक पूरी की पूरी playlist बनी है, and only 10 days are left for your examination, so prepare it well. Okay, so without any wasting our time, let's see the answer. Answer is M.H. Abrahams. Okay, so he is the critic who is known for the mirror and the lamp. Now we have question number 53. That is, an essay on criticism was written by. An essay on criticism किनके द्वारा लिखा गया है? Samuel Johnson, John Dryden, Alexander Pope, Jonathan Swift. Okay, so the right answer is option number C, Alexander Pope. Okay, so now let's move to this question number 54. The protagonist of the Lord Jim is. Who is the protagonist of the Lord Jim? Was the Jim Hawkins or Jim Dixon? So you can see two options, or you can say that okay, so maybe one of them is there, but you can another see that Lord Jim is also there. So you can see Jim, so it's so much confusing. So question can be framed like this. So they will try to confuse you because they will put Jim Dixon as well as Jim Hawkins, Lord Jim. Okay, so this C तो हो ही नहीं सकता. Then the right answer is option number D, Lord Jim. Okay, now move to the question number 55. It is, who wrote the play Look Back in Anger? Look Back Anger एक बहुत ही फेमस वर्क है जॉन ऑसबॉर्न का, है ना फ्रेंड्स. और ये कब पब्लिश होता है? ये पब्लिश होता है 1956 में. सो इफ़ यू वांट अ वीडियो, ऑलरेडी देयर इज़ वन वीडियो वेयर आई हैव मेंशन लाइक दिस. देयर इज़ यू विल फाइंड द टेबल. यहाँ पे आपको पूरे राइटर्स मिल जाएंगे और इनके पूरे इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और पब्लिकेशन डेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, कैरेक्टर्स के नेम यहाँ पे मिल जाएंगे. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो विच इज़ देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ you can watch it for a better understanding of all the publication date, because you know in your examination publication dates तो पूछी जाती है. At least you will see a question around 10 questions will be there on the publication dates. Please remember it. Now let's move to the question number 56. That is, which novels ends with the line "after all tomorrow is another day"? After all tomorrow is the another day, Rebecca, Gone with the Wind, Jane Eyre, Vanity Fair. बताइए किन what is the right answer? So the right answer is Gone with the Wind. Okay, सो ये आपको लाइन आप जब इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे, तभी आप ये इनका आंसर कर पाएंगे. अदरवाइज दीज क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी टफ टू यू. ओके, now let's move to the question number 57. Who wrote Discipline and the Punish? Who wrote this work, friends? Who wrote this It's the Jacques Derrida, Michael Foucault, Roland Barthes, Jean Baudrillard. Who wrote Discipline and Punish? Very, you know, in unit 7 you can see the literary theory and criticism. This question is from there, and the right answer is Michael Foucault. Okay, now let's move to the question number 58. That is, in Shakespeare Macbeth, who is referred as none of woman born? Macbeth वर्क है और none of the woman born. बताइए, Banquo, Malcolm, Macduff, Flynns. बताइए जल्दी, fast friends. Yeah, so the right answer is C, Macduff.
Now let's move to the question number 59. Who introduced the concept of the sublime and the beautiful? ये कौन इसका देते हैं? Emilian Kant, Edmund Burke, Samuel Johnson, Coleridge. The sublime and the beautiful. The sublime and the beautiful is given by the Edmund Burke. Please remember it. Now let's move to the another question. The Rape of the Lock is a lyrical ballad, mock epic, dramatic monologue, or it's an satirical ode. What is the Rape of the Lock? You can see it's a satire, है ना friends? It's a satire, but it's satire also. But don't confuse between the satire and the satire ode. It's not an ode. It's a mock epic. Please remember it. Okay, so now the stream of consciousness technique is most associated with which writer? George Orwell, James Joyce, E.M. Foster, Evelyn Waugh. So stream of consciousness, Virginia Woolf as well as James Joyce as two very famous writer. Okay, so Mrs. Dalloway is there from Virginia Woolf, and they an artist as a young. Okay, so these two work are written on the based on the stream of consciousness. Now let's move to the another question. Who authored Gender Trouble? Gender Trouble का कौन author है? Who is the author of Gender Trouble? Simeon de Beauvoir, Helen Cassis, Judith Butler, Sandra Dilbert. The right answer is Judith Butler. Now let's move to the another question. The term rhyming couplet typically refers to rhyming couplet मतलब क्या होता है friends? Two rhyming lines of the iambic pentameter, two rhyming stanzas. Stanzas तो हो ही नहीं सकता. The free verse poetry बिल्कुल नहीं. A chorus and the verse pair बिल्कुल नहीं. So then the right answer is two rhyming lines of the iambic pentameter. It's not a very difficult question. It's really very easy question. Now let's move to the another question. Who wrote the Mad Woman in the Attic? किन्होंने लिखा है The Mad Woman in the Attic? Please tell me. Dilbert and Gubar, Alan Shorter, Helen Cassis, Julie Becker. इन तीनों ने तो नहीं लिखा है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज, पहली इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी? यू मस्ट रिमेंबर इट. प्लीज टेल मी. द राइट आंसर इज राफाल रोस्टर डोस्टर. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज कीनिंग? व्हाट इज अ कीनिंग? ये क्या है? ये एक लिटरेरी टर्म है. इट्स अ मेडिवल रिलिक. इट्स अ मेटाफोरिक कंपाउंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश. इट्स अ सोनेट वेरिएशन, refrain in ballads. What is scanning, friends? Very important term. Please tell me. The right answer is it's a metaphorical compound of the old English. Please remember it. Scanning अगर आपसे वर्ड पूछ लिया जाए आपको पता होना चाहिए. I'm sorry. I'm so sorry. Now let's move to the question number 67. That is White Sargasso Sea is a prequel to. देखो दो चीज़ें होती है फ्रेंड्स. एक होता है सीक्वल और एक होता है प्रीक्वल. What is the difference between sequel and the prequel? सीक्वल एक कोई वर्क है उसके बाद में आता है, और अगर उस वर्क के पहले कुछ आता है उसे प्रीक्वल कहते हैं. द वाइट सैरोगो सी इज ए प्रीक्वल टू. किसके पहले था? जैन आयरी, वस्ट्रिंग हाइट्स, मिडिल मार्च, नॉर्थ एंड साउथ. प्लीज टेल मी आंसर फास्ट. The right answer is Jane Eyre. Please remember it. Now let's move to the another question. The child is the father of man, which is a really very important phrase, and it is from which poem? Which poem, friends? The child is the father of friends. Very easy question, friends. Wordsworth कहते हैं. I'm sorry, वर्ड्सवर्थ कहते हैं. और ये कौन सी पोएम में कहते हैं? माई हार्ट स्लीप्स अप. ओके, और ये एक रोमांटिक बिलीफ है और फॉर्मुलेटिव पावर ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्ट आइडेंटिटी. एक चाइल्ड है उसके कंपैरिजन करते हैं एक अडल्टहुड से. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स. आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. नेट करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी UGC नेट, वहाँ पे आपको जाके वीडियोस देखनी है मेरी. विच मूवमेंट डज वेटिंग for Godot belongs to? Which movement, friends? Which movement is the correct answer? Surrealism, absurdism, realism. So I have already discussed in my part 1 video. Okay, so if you haven't watched it, please watch it, and the right answer is absurdism. Now let's move to the question number 17. In which novel does the character Stephen Douglas appear? ये किस character कहाँ पे आता है friends? Ulysses में आता है और पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट में आता है, दोनों में आता है, और नन ऑफ द अबव. देखो फ्रेंड्स, इट्स ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द AP 2022, और इसका एग्जाम कब होता है? 2024 में. वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है. बताइए जल्दी से आंसर.
सो द राइट आंसर इज बोथ फ्रेंड्स, बोथ, दोनों में ही है स्टीफन डॉगलस. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? की कौन सी नॉवल नहीं है? सो वर्जीनिया वुल्फ को आपको सारी नॉवेल्स पता होनी चाहिए और इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं. टू द लाइट हाउस, ये तो है. नाउ यू मे बी कंफ्यूज बिटवीन दिस थ्री, but I am telling you that Jacob's room is also work by the Virginia Woolf. The Waves is also the work. The Rainbow is not work by the Virginia Woolf. The right answer is option number D. And the Rainbow, but लिखा किसने है? So the right answer is D.H. Lawrence. D.H. Lawrence लिखते हैं ये work. Okay, D.H. Lawrence is the right answer, friends. Okay, so now let's move to the another question, that is question number 72. Who wrote Culture and Anarchy? Very important. Matthew Arnold is the correct answer. Okay, and when it is published, friends, it's published in 1869. Please remember it. Now we have question number 73. The phrase the willing suspension of belief was coined by, willing suspension of belief is coined by whom? It is by S.T. Coleridge. The Second Sex was written by, the Second Sex किसके द्वारा लिखा गया है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जूडिथ बटलर, सैमुअल डी वेबियर, हेलेन सेसियस. Please tell me. The right answer is option number C, Samuel D. Webier. Now let's move to the another question. Who among the following is the Jacobean playwright? Jacobean periods के आपको playwrights के नाम दिए गए हुए हैं, मतलब नहीं दिए हुए हैं. देखो, जो एक आपकी आई थी ना एनलाइटमेंट एज, और यू कैन से रेनेसा, उसमें 4 एज थी. पहली एज थी एलिजाबेथन, दूसरी एज थी जैकोबियन, फिर थी कॉमनवेल्थ, है ना. So you have to tell me the writers. So you can see that Christopher Marlowe belongs to the Elizabethan age. We have Bo Johnson from Elizabeth, Robert Greene from so the right answer, no, this person is not Thomas Kidd. ये यूनिवर्सिटी किड्स के मेंबर हैं ये तीनों, but John Benson is not the university kids, means he come in the Jacobean period. So the right answer is Ben Jonson. Please remember it. Okay, so actually today my pen is not working on my screen, that is the reason why you may not able to understand my writing, but it's okay. We will move to the another question, that is question number 76. That is the Castle of Otranto is an example of. The Castle of Otranto किसका एग्जाम्पल है? ये रोमांटिक नॉवल का एग्जाम्पल है, पेरस्क्यू नॉवल का एग्जाम्पल है, गॉथिक नॉवल का एग्जाम्पल है, एलोग्रिकल नॉवल का एग्जाम्पल है. यस, सो द राइट आंसर इज गॉथिक नॉवल का एग्जाम्पल है ये. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज हु रोट द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स अ फाउंडलिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पिछले साल AP 2022 में भी ये क्वेश्चन था, और यू कैन इफ यू हैव अपीयर्ड इन द सेट एग्जामिनेशन देन देयर आल्सो यू विल सी एक क्वेश्चन तो द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स से पूछते ही हैं. सो राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग, है ना फ्रेंड्स. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ. किसके फॉर्म में ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स? इट इज डायरी, मेमोयर, एपिस्टोलरी, फ्री वर्स. किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एपिस्टोलरी. और फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो these terms, there is already my video on literary devices. There you can find all these things. Okay, please watch that video. Where you will find it? There will be a playlist. There is a playlist UGC net, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. Now let's move to the another question. Question number 79. The Tiger और The Lamb were written by, किनके द्वारा लिखा गया है ये दोनों वर्क? कॉलरिज, S.T. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्लेक और शैले. The right option is option number C, Black. Okay, so now let's move to the another question. Who coined the term Orientalism? Orientalism बहुत important question है, किसने term दिया है? The right answer is option number B, Edward Said. The novel 1984 is example of magical realism, postmodernism, dystopian, abstract fiction. किसका example है 1944? कौन लिखते हैं? जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं. जॉर्ज ऑरवेल का ये वर्क है 1984, है ना. और ये एक डिस्टोपियन फिक्शन है ना फ्रेंड्स. द ऑप्शन नंबर सी, यू कैन सी, डिस्टोपियन फिक्शन है. और ये कब पब्लिश होता है फ्रेंड्स? भले इसका नाम 1984 है, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन 1984, बट इट वाज पब्लिश्ड इन you have to tell me, you can tell me in my comment section. Okay, so now let's move to the another question. Miss Dalloway covers what time span? एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, कितना कवर है? ये केवल एक ही दिन है.
What is the rhyming scheme of Shakespearean sonnet? Very important question. You have to remember each thing. Shakespearean sonnets में कितनी rhyming scheme क्या है, उसके बाद Spenser sonnet में कितनी है. You have to remember it. Now tell me fast, friends. The right answer is option number A. A B A B C D C D E F E F G G. Okay. Now let's move to the question number 84. The line "Things Fall Apart." The center canal also comes from the second coming by the William W.B. Yeats. William Butler Yeats, which was published in 1917. Okay. Which critic proposed the theory of the anxiety of influence? ये किसने publish किया हुआ है, friends? The right answer is Harold Bloom ने. Which of the following is the metaphysical poet? William Blake, Andrew Marvell, William Wordsworth. You can easily metaphysical poet Andrew Marvell. The Fairy Queen was written to glorify. किसको glorify करने के लिए किया था? हेनरी एट को, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, क्वीन विक्टोरिया को, जेम्स वन को, किसको फ्रेंड्स? वेरी इजी क्वेश्चन. क्वीन एलिजाबेथ वन. What kind of play is Dr. Faustus? Faustus by Christopher Marlowe was a what kind of play? Morality play, Ferris, tragedy, history play. If you want to know what is these all things, you can watch my videos, and you have to tell me the right answer. And it's, you know, the Faustus is the tragedy. It is there is a two angel, one angel is good and second angel is bad, और ये अपनी जान को दे देता है 24 साल के लिए. ये एक पावर को अटेन करता है एंड एवरीथिंग. डॉक्टर फॉक्टस के पहले ऊपर मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं. Now let's move to the another question. Who among the following is the key figure in the post-colonial studies? कौन सा? डेरिडा, एगल्टन, एडवर्ड सेड, टोडोरोव. Who is the post-colonial studies का एक बहुत ही important figure है? Please friends, please tell me fast, friends. The right answer is Edward Said. Option number C. Now let's move to the question number 90. What is that is no country for old men? That is no country is the opening line poem by किसकी ओपनिंग लाइन है? ये W.B. Yeats की ओपनिंग लाइन है ना. और ये सेलिंग टू बेंजिंटियम से है ये ओपनिंग लाइन, एंड सेलिंग टू बेंजिंटियम से है ये लाइन. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी है? रफाल वॉस्टर्ड. Please tell me. This is the repeated question and the right answer is question number A. The Way of the World is a play by. The Way of the World किसके द्वारा लिखा गया है? रिचर्ड सर्डन, विलियम कॉनग्रीव, जॉर्ज फकूहार, जॉन ड्राइडन. The right answer is William Congreve. The Way of the World. Please remember it, friends. Okay, so now let's move to the question number 93. In Paradise Lost, who is the chief architect of the Pandemonium? कौन है इसका chief artist? Please tell me. You can see the options on my screen. Please tell me. The right answer is Moshibar. Mulkibar. Okay, now we have another question, that is the line beauty is truth beauty. जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपको जॉन कीट्स के बारे में याद आएगी. एंड that is all ये know on earth and all you need to know is from जॉन कीट्स का वर्क है. जॉन कीट्स का किस वर्क में ये लाइन मेंशन है? एंड इट इज़ मेंशन इन दी ओड ऑन आ ग्रेशियन ऊन. ग्रेशियन ऊन मतलब कुछ नहीं, एक आपने सुराही देखी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सुराही. ये म्यूज़ियम में देखने जाते हैं जॉन किट्स और उस पर ही एक बहुत अच्छी पोएम लिख देते, मतलब एक ओड लिख देते हैं. बहुत सारी ओड्स लिखी हुई हैं जॉन किट्स ने. ओके. Now we have question number 95. The Rape of the Lock. The characters Belinda based on. किसके ऊपर based है ये? Arabella Fermor, Claudia Haraway, Lady Mary Wortley Montague, Duchess of Marlborough. बताइए friends. The right answer is Arabella Fermor. Okay, now let's move to the question number 96. That is which of these poet is not associated with Pre-Raphaelite Brotherhood? Pre-Raphaelite Brotherhood के ऊपर मेरी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको बताना है. He is the founder, he is there, but we have to tell the note. So Dante Gabriel Rostoti तो हो ही नहीं सकता. William Human Hunt भी नहीं हो सकता. William Morris and Alfred Tennyson. So Alfred Tennyson seems something odd, and it is the right answer. Okay, so these three are the पार्ट ऑफ Pre-Raphaelite Brotherhood. Pre-Brotherhood विक्टोरियन एरा में आया था. आप ज़्यादा जानकारी की वीडियोस देख सकते हैं. Now let's move to the question number 97. The Blessed Damsel reflects theme of which movement? विच मूवमेंट के थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स? एंड ऊपर वाले क्वेश्चन से ये हमें आंसर मिल जाएगा, Pre-Raphaelitism.
Now we have negative capitality was coined by the John Keats. Very easy questions. T.S. Eliot's tradition and the individual terrains argues that. क्या argues करता है? Originality is overrated. Tradition and the impersonality are essential. Poetry must reflect individual emotion. Poetry should rebel against the canon. Which is the correct answer, friends? The right answer is B. Tradition and the impersonality are essential. Tradition and individual. ये कब publish होता है friends? 1920 में. 1920 में ही T.S. Eliot अपने 3-4 वर्क एक साथ लगातार पब्लिश करते हैं, ठीक है। और इसमें हेलमेट एज अ आर्टिस्टिक फेल्योर बताते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी देते हैं, है ना। इफ़ यू वांट एन वीडियो ऑन टी.एस. एलियट प्लीज़ tell me in the comment section, or there is already one video on YouTube channel, you can go through it. Now let's move to the question number 100, and this is the last question of the part 2 series, and now soon we will have the part 3 where we are going to cover question number 101 to 150. Okay, so I hope you have watched all the means of part 1, and this is the part 2 and part 3 is upcoming. So let's do it. Who is the center character of Sanjay Rider to the Sea? Very important question. Who is the center character, friends? Who is the center character? Bartley, Kathy, Nora, Mora. Moria. So Nora is the character, but it is not the central. Bartley is the character, but not central. Kathy, but the Moria is the right answer. Question number 10. And that's all from my side. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel. Please share the link. Please share this YouTube video links to your friends so that most of us will be benefited by this video. Thank you so much for joining me.